100% चांसेस हैं, इसके 100% चांसेस हैं कि आप जो हैं यू आर जस्ट गोइंग टू बी देयर और आपको जो है योर सिलेक्शन इज 100% देयर. इट्स नॉट द केस. यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग. ऐसे इंटरव्यूज में भी हुआ कि उन्होंने कहा ओके आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर फेवरेट राइटर. एस्पिरेंट ने याद किया, उन्होंने कहा जी आई एम सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट राइटर, आई हैवंट रेड दैट राइटर एक्चुअली. आप किसी और राइटर की बात करें. अब गो अहेड. एम्बैरेसिंग सिचुएशन. एम्बैरेसिंग इसलिए नहीं कि उसने पढ़ा नहीं हुआ, एम्बैरेसिंग इसलिए कि अब जब हमने इसके अलावा तो किसी को तैयारी नहीं किया होता, अब हम फंस जाते हैं. फिर वो किसी एस्पिरेंट ने कहा जी आई एम इंटरेस्टेड इन पोइट्री. उन्होंने कहा जी ओके बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पोइट्री. आप नॉवल में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो? ठीक है जी जी ये हुआ था, थैंक यू, आप ठीक कह रहे हैं. सो आप नॉवल में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? ठीक है जी. सो व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन ड्रामा? तो अब आप कह दें कि जी नॉवल का तो मुझे पता ही नहीं है, मैं तो बस नॉवल शुरू से नहीं पढ़ती हूँ वगैरह वगैरह. अगर आपको रीजंस भी देनी है सो यू नीड टू गिव देम रेशनल रीजंस, यू नीड टू गिव देम आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन रेशनैलिटी. ठीक है. और एक चीज और याद रखिएगा, अक्सर औकात जो है यू ऑल माशाल्लाह यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स इन इंग्लिश, some of you guys they have completed the MPhil in English. The thing is that learn these two basics of the moralities. The first one is if a person, and here I mean the person who is interviewed, who is asking the questions, the mood of language is very important. If he is asking the questions in English, you are 100% expected कि आप उसको आंसर दीजिए इंग्लिश में. बट इफ ही इज आंसरिंग द क्वेश्चंस इन उर्दू तो आपको उसी जुबान में ही उसको रिस्पॉन्स देना है जिसकी जुबान में वो पूछा जा रहा है. ठीक है जी. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर. और इन तमाम चीजों के बाद एक और चीज कि आपके जब इंटरव्यू की डेट्स आ जाएं, जब इंटरव्यू पीपीएससी रिटन रिजल्ट करने के बाद, अभी तक जो पीपीएससी की हिस्ट्री चल रही है वो ज्यादा टाइम आपको नहीं देगा. ठीक है. कमीशन मैक्सिमम 10 डेज शायद दे दे, मैक्सिमम 10 डेज दे दे और मिनिमम शायद 7 डेज दे दे. हाँ, इससे पहले माजी में कुछ ऐसे इंसिडेंट जरूर हुए कि अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रही. जैसे 2020 में जो है वो यूं हुआ कि कमीशन जो है वो स्कैंडल सामने आ गए, तो फिर तो 6 महीने भी लग गए. लेकिन अगर खुदा ना खासा ऐसी सिचुएशन होती है, और जो कि इस दफा उम्मीद है कि नहीं होगी और बल्कि यकीन है कि नहीं होगी, उसमें आपकी प्रिपरेशन डाउन होने के चांसेस होते हैं. और एक चीज मैं और बता दूं, गलत फहमी यहाँ पे अपनी दूर कर लीजिएगा. वो लोग बहुत लकी होंगे कि जिनके इंटरव्यूज पीपीएससी टेस्ट प्लान करता है, इंटरव्यूज प्लान करता है और इनिशियल डेट्स में इंटरव्यू हो जाते हैं. हम सब इंसान हैं, कमीशन के मेंबर्स भी इंसान हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी इंसान हैं, हमारे डिपार्टमेंट से होते हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से होते हैं. ये मुमकिन नहीं होता है कि आपने बैक वक्त को 200 या 300 के करीब किताबें आपकी फिंगर टिप्स पे हों. लेकिन ये मुमकिन जरूर होता है कि आपने जो है वो 40-50 के करीब इंटरव्यूज डेली या कम से कम 30-35 इंटरव्यूज डेली किए हों. आपको ये जरूर पता चल जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ पे आके स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे रुकते हैं, कहाँ पे आके इनको प्रॉब्लम हो. ठीक है. सो ये चीजें जरूर होती हैं. तो ये फैक्टर्स भी बैड कैप शामिल हैं कि जो पहले इंटरव्यू में चले जाते हैं उनके लिए कुछ आसानी हो जाती है, और जो बाद में जाते हैं उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी इसलिए होती है कि उनके लिए क्वेश्चंस कुछ नए भी आ जाते हैं. बट द पर्सन हु has prepared himself perfectly, he is not going to face any difficulty at any step. So enough for the general discussion. अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं आप उन क्वेश्चंस को लेंगे. हम 6:25 तक आपको क्वेश्चंस को वन बाय वन इंटरचेंज करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम इस जैनब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अगर मौजूद हैं तो हम उनके लिए इंटरव्यू के लिए प्रोसीड फर्दर करेंगे. सो अगर मिस जैनब हैं तो वो अपना नेम चैट बॉक्स में लिखते हैं. अगर वो नहीं होंगे तो फिर हम डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस को देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड वी विल डेफिनेटली डिस्कस कि आपने उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है. 20 के करीब जो क्वेश्चंस हैं and how all these things are going to proceed further. Ji, someone was asking a question. So there was a question. What should be kept in mind if we take Jane Austen as favorite writer? Which aspects are to be prepared, Usma?
वेल मेरा जाती सा ख्याल है कि जेन ऑस्टन एक बड़ी अच्छी राइटर है, इसको जरूर लेना चाहिए, नॉवलिस्ट है बेसिकली। लेकिन जेन ऑस्टन फेमिनिस्ट फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव से भी इसको जरूर देखिएगा। जेन ऑस्टन के मुतालिक जो अच्छी चीजें हैं कि इसका जो इरा है वो रिलेटिवली बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर राइटर्स। मेजर अगर हम बात कर लें तो ये सिर्फ अपनी 5-6 किताबों की वजह से जानी जाती है, और इन किताबों पे भी इतना काम हो चुका है कि इन केस यू आर जो राइटर मुख्तसिर था, जिसका टाइम थोड़ा कम था, उसके ऊपर क्रिटिक ठीक ठाक मौजूद थी। You need to remember, Miss Uzma, in case you are going to prepare, in case you are going to take Jane Austen as your favorite writer, favorite novelist, you need to remember you will definitely talk about the plots of Jane Austen, her views about women. I'm talking about dependence and independence of the women on marriage. So, what Jane Austen means by economic security of the women. Definitely, you can take a lot many references from her novels, and why Jane Austen is considered the writers of novels of sensibility. So, do you really feel so that her novels that were a sort of transition move हो रहे हैं ना 18th century से 19th century में, तो रियलिज्म में किस तरह सचा रहे हैं, इसी के पर्सपेक्टिव्स में देखिए कि क्या आयरनी मौजूद है, ये किस तरह के नॉवेल्स के अंदर इसमें बात किस तरह की हो रही है। ठीक है, एम्मा जो है वो बड़ा फेमस है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंसिबिलिटी है, फिल्म पार्क है, कुछ यही है इसके जो है वो नॉवल जो है वो। परसुएशन पे एक मूवी है, वो अगर आप देख लेंगे तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, और एक इसका जो है वो नॉवल था लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर सकी थी, उसके ऊपर भी एक इंटरव्यू में बात हो गई थी। वो इस जो है जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी जेन आस्टन इंटरेस्टेड, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। सो आपको ये भी देखना है कि इसने एपिस्टोलरी लिखा था, इसके नॉवेल्स की टाइप्स। ठीक है जी। और एम्मा के रोल के ऊपर देख लीजिए कि क्या उस वो एम्मा के रोल में क्या वो खुद मौजूद है। ठीक है, और ये तमाम चीजें जो है वो आपको काफी मदद दे सकती हैं। आई थिंक दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, मिस सरवत का एक क्वेश्चन है जी। मिस सरवत प्लीज, यू may unmute your question. Alaikum sir, how are you? I'm a bit down today. I'm sure you're fine. Okay, sir, about Jane Austen, I wanted to add that almost everyone of Jane Austen is favorite. I remember last time it was rather very vehemently asked by the interviewer that why every second person goes for center I'm talking about. So Okay. because everyone for Jane Austen because of her only 6 novels, her short span, and her limited range. I think that's Oh yeah. I was having a distortion for the response. Was it clear? I'm talking about my service voice. Was it clear? I was having a distortion. Okay, it was clear. Okay. Well, Mr. Wood, thank you so much for highlighting a very important question. And yes, that's damn true reality. Whenever you're talking about Jane Austen, you need to be different. Not only Jane Austen, the same is the case whenever you're talking about John Keats, whenever you're talking about Christopher Marlowe, whenever you're talking about Charles Dickens, whenever you're talking about Thomas Hardy and Henrik Ibsen. So these are the names that are, the order of the day, the tune and tenor at that time. But I still remember when someone is going for Jane Austen, the critique, the sentimental novels, the nature of Jane Austen's novel being the center of the discussion, the differences from 18th to 19th century and the transitions, these are discussed there. So yes, you should not go with the flow. Interview is not the name of taking your favorites and you're just going for Jane Austen because Jane Austen is the favorite of a lot many people.
Or you're just taking Jane Austen because she has just jotted down 6 novels and it is relatively easy to complete Jane Austen as compared to the other writers. My recommendation is to prepare at least 2 favorite writers. One that you feel like, all right, that's my famous favorite one. The second should be as your backup one. Okay. So in this way, you are going to definitely defend and present your arguments there. We have a question from Y9. I don't know what is this name exactly. What's your good name, Y9? So I may proceed further with the answer. Uh, have I for so what is your question? I'm going to unmute yourself, Mr. So question where is okay. Please if you no? Hello. What aspects to be prepared? Okay, Miss Uzma, because Ernest Hemingway favorite writer and is favorite writer as well. So I'm just going to, in case you feel these are excessive details, you may skip these details, but these are important. Starting very like from the nationality of Ernest Hemingway, you need to understand that he was not merely a novelist, but a short story writer and journalist as well. So, while preparing Ernest Hemingway, you need to remember the journalist aspect of his life as well. Another important question that not many aspirants skip during the interview is the theory of Ernest Hemingway. That is iceberg theory. Iceberg theory is very that you will know about the details of the iceberg theory. So, iceberg theory is whenever you see anything, the whole fact is not in front of you. So, you just have a very minor piece of like ice in front of you, and the berg is somewhere there in the water, and it needs your own interpretations. Okay, so you need to prepare this theory. The third thing is you need to prepare the novella, that is Old Man to Sea, because Ernest Hemingway won Nobel Prize in 1954 for this particular piece of literature. So you need to remember about his 7 novels, 6 short stories, and moreover, do not forget the details that he married Hadley Richardson. Okay, the first of 4 wives. That means he married for the 4 times. Okay, and last but not least, his writing style is very important. You need to understand what other people, like the critics, like we have Henry Louis Gates, who is having a lot many things, who has said a lot many, given a lot many statements about Ernest Hemingway. So what he is saying while he's mentioning and talking about Ernest Hemingway, the themes of Ernest Hemingway. So, theme of love, maybe theme of war, travel, wilderness, loss, and all the things, they're important for you to understand and prepare. Okay. Last but not least, you should keep these particular aspects, these particular writings on your fingertips about questions relevant to war regarding Hemingway. Oh yes, but once you're going for Ernest Hemingway, you're supposed to prepare these questions. You need to prepare The Sun Also Rises. You need to watch A Farewell to Arms. Listen my words carefully. You need to prepare The Sun Also Rises. You need to watch A Farewell to Arms. You need to watch For Whom the Bell Tolls. You need to prepare The Old Man and the Sea. For Whom the Bell Tolls is very important because there are a lot many references available in For Whom the Bell Tolls. So you need to watch the cinematic version of this particular play. और बड़ा आसान है इसको ढूंढना. Just go there in YouTube and type how to download movie from torrent, 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 and you will find the answer. Okay.
So these things are important. Last but not least, Ernest Hemingway, because he was an American writer, so American influence and style is important. Okay, so maybe you will be asked to identify the influence of American literature from The Sun Also Rises that he published somewhere in 1926. Okay, so I think you need to prepare all these things very carefully. Okay, in case I have answered your question, that's fine. In case you feel that some portion is there still and you want to go for escalation, you may put your question there. Yeah, lost generation is there, but all right. His his poems, his all the things, definitely. Whenever we are going to prepare for the iceberg theory, all these things will be covered under that specific heading. Okay, ji. So we have Miss Zainab with us. Miss Zainab is there. Okay, in case you have any other question, please type your question. And give me 30 seconds. I'm just coming back after 30 seconds. Okay, ji. So participants, Ms. Zainab is there. We haven't Ms. Zainab with us. All right. Okay, so Thomas Watson. Okay, I am going to recommend Thomas Watson. So can you just mention the books that you have consulted about Thomas Watson? Is there any book that you have consulted? Can you just put the name of the book here? So how to remember lines. There is a book, wonderful book available where I think it's about written by T.C. And the Beer Mulk's book is also a good one. So in case you have any book, these two books are going to help you about Thomas Watson. So how to remember lines, that once again, that depends upon your own passion, how much enthusiastic you are about a specific writer. What about Keats as favorite? Yes, Keats is a favorite one. Unfortunately, Keats is a favorite of every person. So avoid taking Keats. In case Keats is your favorite one, you need to take a lot many references. You need to remember a lot many lines from John Keats. Okay. In case you, okay, we have another question. Sarvat, in case you are not able to find enough data, you may contact me after 10 p.m. If it is feasible for you, we can discuss Thomas Watson. Okay, see, as in one interview I was told lines from some poems and I was asked to guess from where they are taken and how to explain those. Yes, lines and explanation, that is the order of the day. And in case someone is going to take Keats as his favorite one, definitely he is supposed to mention the details, the lines, the odes, and all the things about Keats. Okay, so proceeding further about important questions taken from Jacobean age, the very age after Elizabethan age. Well, participants remember one thing, the causes of the decline of drama. First of all, you need to prove there, is it true the drama declined after William Shakespeare? If it is, then you need to prove it. How? Maybe while mentioning the decline of drama, you may mention a very famous quotation by Long, William J. Long. The drama should decline after Shakespeare for the simple reason that there was no other great enough to fill his place. After that, you are done with the decline of drama. You need to understand how many total groups were there. The old dramatists, the
satire group, old drama group, and then we have satire group. So please do prepare all genres, all groups, why drama was declining and why in restoration age, in the age of Charles II, drama moved up once again. So here you need to understand and differentiate between domestic drama. What is domestic drama? You need to understand what is the drama that is highlighting the commercial life. Okay, so new experiments maybe. So after William Shakespeare, we have new experiments. So the exact question is, try to pinpoint some new experiments in the field of drama after the demise of William Shakespeare. So you need to pinpoint all these things. Okay, Ji. Moving on from here, let's talk about some important aspects. You need to understand, participants, जैकोबियन एज की जब भी बात करोगे सटायर और रियलिज्म को कभी ना भूलिएगा, ठीक है? और एक कैरेक्टर जो है जो आपको हमेशा राइटर याद रखना है और जिस पे इनफ डिस्कशन होती है, दैट इज बेन जॉनसन. आई एम नॉट सेइंग सैमुअल जॉनसन. एक इंटरव्यू में एक स्टूडेंट ने पूछा, उन्होंने कहा जी जॉनसन की स्पेलिंग क्या है? उन्होंने कहा वो इतना आसान क्वेश्चन, JOHN जॉनसन. So, can you write the correct spellings of Johnson? If these are not the spellings of Johnson, then what are the spellings of Johnson? Yeah, it was Ben Johnson. So they asked the very simple question, what are the spelling in Ben Johnson? What are the spellings of Ben Johnson? So while preparing Ben Johnson's, do not ignore the contributions of this person. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको खसूसन कॉमेडी में इसकी कंट्रीब्यूशंस को देखना पड़ेगा, कॉमेडी में देखना पड़ेगा. और इसकी वजह ये है कि इसने एक नई तरह की कॉमेडी दी थी. इसने एक ऐसी कॉमेडी दी थी जो कि बिल्कुल नहीं थी 16th सेंचुरी वालों के लिए. यूनिवर्सिटी विट्स लिख रहे थे, मार्लो, लिली, ग्रीन, काइड वगैरह वगैरह, लेकिन जो इसने लिखा था, इसने बिल्कुल मुनफरिद लिखा. बेन जॉनसन जो है उसे ये लगता था कि जो ये क्लासिकल को फॉलो करता था, इसे लगता था जो ग्रीको रोमन की बातें करते हैं वो बड़े अजीम लोग हैं. सो इस एस्पेक्ट को देखिएगा. आपने लेक्चर्स में भी इन तमाम चीजों को देखा होगा, ठीक है जी. सो बेन जॉनसन से मुतल्लिका एक और क्वेश्चन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज जॉनसन्स, मैं भी जॉन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा, जॉनसन्स रियलिज्म जो है वो आपको पता होनी चाहिए. रियलिज्म कहते हैं किसको है? यू नो वेरी वेल. जॉनसन जो है इसने रियलिज्म उस तरह से तो नहीं दी कि जिस तरह से रियलिस्टिक वर्क होता है, लेकिन ये करीब तर लेके आया था रियलिस्टिक चीजों के. और इसने कोशिश की थी कि अपने आप को बाद में आने वाली जो मूवमेंट थी, इवन रोमांटिक एक्सपीरियंस थे, ठीक है, और जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं, उन तमाम चीजों से खुद को अलग करें. अच्छा, ये मिस उज़मा साहिबा ने एक लाइन ड्रा कर दी हुई है. अब हम इसको पहले शायद डिलीट ही कर लें तो अच्छा है. शायद ये कुछ लिखना चाह रहे थे और हम जो हैं वो इन्हें इजाजत नहीं दे सके. ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जॉनसन्स रियलिज्म इज इम्पोर्टेंट. तो इसको भी जो है वो जरूर देखिएगा. अमूमन एस्पिरेंट्स इसको स्किप कर देते हैं. ओके जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज द स्कूल ऑफ बेन जॉनसन. ये हमने अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है और इंटरव्यूज में भी पूछा गया. अब ये स्कूल ऐसा नहीं है कि बेन जॉनसन ने कोई स्कूल बनाया था और वहां पे ये पढ़ा रहा था. Definitely, you know, whenever we are talking about Ben Jonson, here we mean Johnson's comedy and the followers. Like Chaucer was having a lot many followers, Chaucerians, okay?
English Chaucerians, Scottish Chaucerians. So इसके जो followers थे, they were also the playwrights and known as the sons of Ben. Okay, they were very famous.